आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जजू जी, आपसे तो हम अब आज मिले हैं तो हमारी दोस्ती आगे बढ़ेगी। आप सब लोगों ने सुना, देखा कि जब हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, then there are so many issues that come up. As a doctor, I want to only limit my talk today on the way I view environment as a doctor. मैं ये मानता हूँ कि environment जो है, it is like a chronic disease. जैसे हमें आर्थराइटिस होता है, जैसे हमें एस्थमा होता है, दमा होता है, उसी तरह से क्लाइमेट चेंज जो है एक बीमारी है। और जैसे उम्र के साथ ये बीमारी बढ़ती है, उसी तरह से क्लाइमेट चेंज भी बढ़ता जाता है। इसलिए अगर हमें उसे ठीक करना है तो हमें उसे जड़ से मिटाना है। और हम ये भी जानते हैं कि नॉट ओनली इज क्रॉनिक डिजीज लॉन्ग लास्टिंग बट इज ऑल्सो मल्टी फैक्टर। अगर आपको कोई एक्यूट प्रॉब्लम होगा तो आप कुछ दवाई लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ अ सिंगल वायरस, सिंगल बैक्टीरिया। पर अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। इट इज़ बिकॉज ऑफ सम हेरिडिटरी प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बहुत कारणों से होता है। इसी तरह से जो क्लाइमेट चेंज है उसका एक कारण नहीं होता, उसके बहुत कारण हैं। मैं जो है आज जो बात करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट माई टॉक टू हेल्थ हैजर्ड्स दैट क्लाइमेट चेंज ब्रिंग्स। आपसे मैं ये शेयर करना चाहूँगा राजीव जी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्लाइमेट चेंज विल कॉज 250,000 डेथ्स एवरी ईयर। हर साल 2.5 लाख लोग मरते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इसका जो लॉस होता है दुनिया को वो $4 बिलियन है, US डॉलर्स। इसलिए ये आपने ये जो शुरू किया है कार्यक्रम इज़ वेरी क्रेडिबल। लेट मी स्टार्ट विद एयर पोल्यूशन। हमारे वाइस चांसलर सर जी ने उसके बारे में कुछ बात की, एंड द इम्पैक्ट दैट इट हैज हैड ऑन आवर हेल्थ। वी ऑल नो हाउ पोल्यूटेड आवर मेट्रोज आर, इंक्लूडिंग आमची मुंबई। The number of respiratory problems like allergies, asthma are on the increase. But did you know that air pollution causes 16% of lung cancer deaths and 17% of deaths from heart disorders? Did you also know that there's a medical condition called SAD, which stands for seasonal affective disorders? हम यही समझते हैं कि जो environment का जो effect होता है वो सिर्फ physical होता है, पर एक्चुअली उसका इमोशनल और मेंटल भी होता है। क्या आपको पता है कि एवरी टाइम द सीजन चेंजेस फ्रॉम ब्राइट टू ग्लूमी, मैनी पीपल फील सैड एंड डिप्रेस्ड, एंड वी फाइंड दिस पर्टिकुलरली इन यूरोपियन कंट्रीज। वाटर दिस इज द एलेक्सिचर ऑफ लाइफ। डिड यू नो दैट 80% ऑफ वर्ल्ड वाइड डिजीजेज आर वाटर ब्रॉन, एंड ओवर 3% ऑफ डेथ्स कम फ्रॉम अनहाइजीनिक वाटर विच स्टेम्स फ्रॉम वेस्ट विच इज रिलीज्ड इन आवर वाटर्स। By providing clean drinking water, we can avoid diseases like cholera, leptospirosis, jaundice, dysentery, and many others. Let me end by talking about an impact of climate change, which is like the elephant in the room. Everybody sees it, but nobody talks about it. We all speak of carbon dioxide, but nobody speaks of or talks about methane. Methane is 80 times more harmful than carbon dioxide, and lasts only for 20 years versus carbon dioxide which lasts for 100 years. Which actually means that if you are able to reduce the impact of methane in the atmosphere, we will see the change and the experience in our own lifetime. यानी 20 साल के अंदर हम उसका जो है बदलाव है वो देख सकते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कमती करेंगे तो 100 साल लगेंगे। So it's not going to happen during our lifetime. And do you know that methane also causes physical effects like slurred speech, headaches, irregularity of heartbeat, but also brings about mood changes. The largest region for methane gas in the atmosphere is livestock farming, cattle farming. Therefore, the single most thing that we can do as individuals, other than consuming less energy and measuring and reducing our carbon footprint, is to turn vegetarian or vegan. हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, and our saints have recommended, Mahatma Gandhi ji also said, we talk about non-violence and compassion. It is shocking to know that 75% of the Indian population is actually non-vegetarian. All we have to do is to follow our inherent scriptures, but we fail to follow them. As a doctor,
I would like to end by saying that we should be thermostats and not thermometers in our efforts towards climate change. We should not merely measure it, but change policies and lifestyles to regulate it. Dhanyavad. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra.